Hello everyone, good morning to all. This is Meeta Yadav, your science teacher. Sorry, your GK teacher. In today class, we discuss chapter number 26. Okay. Chapter number 26 is a quiz one. Choose a correct answer. Where is the biggest Buddhist temple in the world located? This is a Java, Indonesia. Second one is which among the following was discovered by Christopher Columbus? Answer is America. Okay. What is the name of the place where Jesus was crucified? Golgotha. The Wonder of the World Christ Redeemer statue is located in which country? Brazil. Where is the Great Barrier Reef of Coral found? Australia. Which is the tallest church in the world? Alam Cathedral. Okay. London, the capital of UK, is situated on the bank of which river? Thames. Okay. Next one, which sculptor designed the Statue of Liberty? Frederick Auguste Bartholdi. Okay. In which city are the headquarters of International Monetary Fund situated? Washington, DC. And next one, question number 10, which is the tallest statue in the world? Statue of Unity. Next one, 11, which is the biggest wall in the world? Great Wall of China. Next, 12th, name the largest Hindu temple in terms of area. Angkor Wat. Okay. Now we move to a question chapter number 27. Nothing is stopped it done. It is the greatest achievement for anyone to perform extraordinary act, but it is even more when this is done despite being spatially able. It is true that no one can stop the person who has the ability to act on what he or she wishes to achieve. देखिए nothing stop them means आपके अंदर कुछ भी वर्क करने का डिस्पाइट होना चाहिए. आप able or disabled or is nothing does matter. In this chapter we discuss about that. She was born in Kerala, India. No one can return trips of Mumbai to Chennai. She met with an accident resulting in an amputation of two of her right leg. She was given an artificial leg. Despite this, she was become one of the most proficient and celebrated dancer of the Indian subcontinent. ये कहाँ पर born हुई थी? केरला के अंदर. जब मुंबई टू चाइना मूव कर रही थी ट्रिप में तो एक्सीडेंटली इनका राइट लेग जो है इन्होंने लॉस्ट कर दिया था. फिर उसकी जगह पर उनके आर्टिफिशियल लेग लगा था. ही बिकम द मोस्ट प्रोफेशनल. उसके बाद में एक सेलिब्रेटेड डांसर बनी है. तो दिस इज शी इज अ सुधा चंद्रन. Okay. Next one is she is a former American track and field athlete at the age of 9. ये अमेरिकन ट्रैक फील्ड एथलीट हैं. कौन सी एज में? 9 एज में शी डेवलप कर डिजीज. लेकिन 9 एज में क्या हुआ? इनके अंदर एक डिजीज डेवलप हुई जिसमें ये टोटली ब्लाइंड हो गई थी. शी इज 3 टाइम नेशनल फिर भी विद 3 टाइम नेशनल चैंपियन. इन्होंने जीता 5000 मीटर रेस का और शी वॉन 4 गोल्ड मेडल. इन्होंने 4 गोल्ड मेडल अचीव किए इन 1992 समर पैरालंपिक्स. In 2001, she co-wrote and published autobiography. इन्होंने अपनी autobiography with no finish line लिखी. My life as I say it. Next one is he was a Dutch painter. He is regarded as one of the greatest painters the world has seen. His painting has contributed immensely to modern art. In his 10-year painting career, he produced 900 paintings. ये Dutch painter थे, ये great painter थे. अगर से इन्होंने modern art के अंदर 10 year के अंदर 900 paintings complete की, 1100 drawing complete की. He was suffering from a mental illness. जिसके बजाय ये क्या थे? mental illness से suffering थे. उसके बाद में साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भी इनको एडमिट कराया गया था. Next day, he was widely regarded as one of the greatest composer in history. He gave his first public performance as a pianist when she was only 8 years old. जब ये 8 year old के थे तब इन्होंने first चीज publish की थी. She studied in Geneva under the guidance of W.A. Mozart. In the year 1796, he began to losing his hearing. ये 1796 में उस टाइम पे उन्होंने हियरिंग उनका प्रॉब्लम हुई थी. इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, इस अपने इलनेस के बाद में भी ही इमर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज वर्क. वो अपने काम में लगे रहे एंड क्रिएटेड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ म्यूजिक. और बहुत ग्रेट वर्क किया था म्यूजिक में. ही अचीव ऑल द डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटली डीफ. ये पूरे तरीके से कंप्लीटली डीफ हो गए थे फॉर द लास्ट 25 इयर्स ऑफ हिज लाइफ. 25 इयर्स इन्होंने
इसी तरीके से निकाले थे। He was a well-known French journalist, ये French journalist हैं। इन्होंने फैशन मैगजीन लिखी थी इन्होंने early 1995 में। He suffered a massive heart attack causing him to go to in a coma। इन्होंने हार्ट अटैक से रिगार्डिंग कोई डिजीज हुई थी, मैसिव डिजीज, जिससे कोमा में चले गए थे 20 days। आफ्टर कमिंग आउट द कोमा ही फाउंड हिमसेल्फ विद अ वेरी रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। उस टाइम पे ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ लॉगरेना सिंड्रोम, in which the mental state is perfectly normal। the mental state नॉर्मल हो गई थी, स्टेबल हो गई थी, बट द बॉडी इज पैरालाइज। लेकिन बॉडी उसके बाद में क्या हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी, हेड टू टॉय। In the case of he was able to move the left eyelid, ये सिर्फ अपनी left eyelid को move कर सकते थे। Despite this condition के बाद में he wrote the book The Diving Bell and the Butterfly by blinking when the correct letter was reached by a person slowly reciting the alphabet over and over again। और बार-बार अपनी eyes को blink करके उन्होंने ये book पूरी The Diving Bell and the Butterfly। Answer is Jane Doe Bobby। He was a British theoretical physicist whose world-renowned scientific career spanned 40 years. His book published appearances have made him an academic celebrity। He was severely disabled by motor neuron disease। इनको कौन सी disease थी? Motor neuron disease थी। He was only 21 जब वो 21 years के थे। Gradually he lost the use of अपने आर्म का use वो नहीं कर पाते थे, लेग का, वॉइस का, एंड एज ऑफ 2009 he was medically declared completely paralyzed। और ये इस टाइम पे completely paralyzed हो गए थे। He used to communicate through a speech जनरेटिंग डिवाइस। इन्होंने एक कम्युनिकेशन करने की स्पीच जनरेटिंग डिवाइस को डिस्कवर किया था। स्टीफन हॉकिंग, he was a next one is he was an American author, political activist, lecturer है। She was the first deaf blind person, sadly deaf और blind person है जिन्होंने बैचलर डिग्री ली थी। एनी सुलिवन was her teacher। इनकी टीचर का नाम एनी सुलिवन था, जिन्होंने कंप्लीट स्पेलिंग DOLLN की फर्स्ट स्पेलिंग थी, जिनको हाथ से टच करके वर्ड्स को फील करा के इनको बैचलर डिग्री दिलाई थी। शी वाज अ prolific author। She traveled to 39 countries with her teacher। वो 39 countries में अपने टीचर के साथ घूमी। She was a good friend of many famous figures including Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin and Mark Twain and Helen Keller। Next, Harry Boniface Prabhu is a quadriplegic wheelchair tennis player। Wheelchair tennis player है। Was a medal winner at the 1998 World Championship। Was awarded Padma Shri by the government in India in 2014 में हुआ इस चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था। Next one is Deepa Malik is the first Indian woman to win a medal in the Paralympics। He won a silver medal in the shot put even at 2016 Paralympics Games। She was honored with the Arjuna Award in 2012 at the age of 42। She is the eldest recipient of the Arjuna Award till date and also received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2019। इनको 2012 में कितनी एज में? 42 एज में अर्जुन अवार्ड मिला था। ओके, एंड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको 2019 में मिला था। दीपा मलिक इंडियन वुमेन है जो पैरालंपिक्स में जीती थी। किस कौन से गेम में बेटा? शॉर्ट। ठीक है, ओके क्लास, आई थिंक you understand both the chapter number 26 and chapter number 27। Okay class, take care।